Once a small sleepy village of Rajasthan, Anandpura is in fact witnessing a revolution. A quiet but vibrant revolution. The process of change started with a women's dairy initiative. Kiran, a 5th class pass lady who was amongst the few educated women in the village, initiated the idea of having a women's dairy cooperative in the village. She was backed by the other women and they formed a small group of 11 members. Kiran then approached the Jaipur Dairy to let her open a women's cooperative milk collection centre. Wary at first because 15 years prior to Kiran's initiative, Jaipur Dairy had to close down the men-run milk collection centre here in view of poor performance and irregularities. The dairy, however, agreed to the idea of an all-women's enterprise managing and running the cooperative venture. हमारे गांव के अंदर पहले डेयरी थी आदमियों की, वो तो बंद हो गई थी और फिर दूध देने का कोई गांव में साधन नहीं था। मात्र केवल ढोल वाले आते थे, ठेकेदार लोग ये दूध लेकर जाते थे। तो इन लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी, कभी दूध लिया कभी नहीं लिया और दूध के पैसे भी अपनी मर्जी के भाव से इनको देते थे। तो फिर हमारे गांव के अंदर ये विचार किया कि हमारे गांव में डेयरी हो तो अच्छा रहे, तो हमने एप्लीकेशन लिख दी जयपुर डेयरी को। तो हमारे गांव में महिला डेयरी खुली। महिला डेयरी खुलने से हमें सभी औरतें एक जगह होने लगी। पहले महिला डेयरी का मकसद यह है कि मतलब औरतें ही ज़्यादातर जानवरों की देखभाल करती है, इसलिए महिला डेयरी खोली। और फिर यह भी था कि महिलाओं के पास में कोई पैसा नहीं आता था, मेहनत भी महिला करती है और फिर बाद में पुरुषों के पास पैसा जाता था। तो अब आज मतलब औरतों को अपनी मेहनत का मजदूरी वो मिल रही है, जानवरों की जो मेहनत करती है वो पैसा इनके हाथ में आता है। A survey was conducted. The capacity of the village to supply milk, the determination and sincerity of women wanting to run the show were all put under a scanner. Thus, exactly in May 1995, Kiran and 10 other women formed a cooperative group. Now there are 136 women members and over 200 women bring milk here. And in the process, so many new women entrepreneurs have emerged. डेयरी से तो मन तो गुना फायदा रही है, डेयरी से बहुत ज्यादा फायदा रही है। पहले डेयरी को जो ढोल लड़ा के गेल गेल ढोल था, जो गायों को दूध को ले जाता, बकरियां को ले जाता और भैंसा को दूध ले जाता और फिर पिस्सा को जाता मानिए गेल गेल डुला था और अब जो गायों को बकरियां को सब को दूध दे जाओ। डेयरी से लोन उठावा भैंस लिया, वहाँ भैंस लिया और फिर भी डेयरी में दूध दे दिया समय दूध दे और फिर माँ का लोन उठावा जी का पैसा भी डेयरी में वापिस जमा करा दिया बैंक में वापिस जमा करा देता। फिर पूरा हो जाए माने तो मैं ब्याज रुपया मैंने दे दुआ और फिर वो उठाई वापिस उठा लिया था। अकाल के समय में जब हमारे पास कमाई का आय का कोई और साधन नहीं है, ऐसे समय में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हर 10 दिन में उनके दूध का समय पर भुगतान करके उन्हें अपनी जीविका उपार्जन के लिए अच्छा पैसा उन्हीं के घर बैठे दे रही है। Merely starting a dairy cooperative wasn't enough. There is emphasis on improving its functioning. Computerization of the dairy office has led to transparency in the working of the dairy. Not only is the milk receipt computerized, the fat content is also measured through the computerized system, leaving no doubt about any irregularity and giving additional confidence to the villagers about the strength of running their own enterprise. The computerized system was installed 3 years ago in an effort to modernize the functioning of the dairy. Each member has a number, and as she gives milk, it is weighed, the milk sample tested for its fat content, and in seconds, she gets to know what price her milk will fetch that day. She is then handed over a computerized printout. The success of the cooperative initiative is reflected in the financial accounts. First, the computer system was installed from the profit of the cooperative. Now, with additional money in its kitty, a new and better dairy office is being constructed. अलग अलग जाति के अंदर तो यही था। हाँ, पहले छुआछूत भी थी, हम सब एक जगह नहीं बैठते थे, मतलब ये हमारे साथ में बराबर नहीं बैठ सकती थी। आज हम ये भेदभाव नहीं रखते हैं कि हम और ये एक जगह नहीं बैठे, अब एक ही जगह एक ही जाजम पर बैठते हैं। नहीं, ये हमारे साथ में बराबर नहीं बैठ सकती थी, अब एक जगह बैठ बीते हैं। और सभी जो डेयरी हमारे वहाँ पर डेयरी पर दूध जाता है, उसी दूध में से किसी गांव के अंदर किसी को ज़रूरत होती है तो वही दूध है। मतलब छुआछूत का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, छुआछूत अब नहीं करते।
उसी दूध को सभी एक जगह होता है और उसके खरीद कर और हम गांव हमारे घरों में काम ले लेते हैं। Now women from different economic and social backgrounds not only come together to supply milk but are members of the same self-help groups, which has further strengthened unity between them. इस समिति की जो महिलाओं की काम करने की जो अंदरूनी इच्छा थी, उसको देखते हुए हमने यहाँ के ओबीसी बैंक से संपर्क किया और उन लोगों को बताया कि इस तरह के बचत साख समूह हमारी समितियों पर चल रहे हैं। अगर आप इन गांवों के अंदर इन औरतों को अलग से आप फाइनेंस करो तो ये अपने स्वयं के लेवल के ऊपर स्वावलंबी योजनाएं बना सकती हैं और बैंक से पैसे लेके पशुधन कार्य का और अलग से कार्य कर सकती हैं। One step leads to another. How true. The bank's Grameen project witnessed the successful grouping together of the women in a different way. While the dairy cooperative provided the women reason to come out of their closed existence and explore the world, provided the initial economic gains which gave these women greater confidence to continue and strengthen their cooperative effort, the Grameen Bank's project is now giving additional economic prosperity. Each self-help group comprises 5 members. 18 such homogeneous groups have been formed gradually. The first step was inculcating thrift habit among the women. Each member thus deposits rupees 20 per week, which is credited into her passbook by the banker who comes here every week on a fixed day and time. बैंकिंग में सबसे बड़ी समस्या थी रीपेमेंट की। यहाँ पर हमने ऋण दिया, वो पूरा हमको वापस मिला और उन्होंने ये पैसा अर्न करके हमको दिया हमारे लोन से। This is the new Anantapura.